afternoon, all of you, and today I'll analyze JEE Advanced 2024 paper. Yesterday I already kept a video, but because of some technical glitch, okay, it is not showing off. It was showing just for a smaller time. Anyway, so I'm going to solve some of the most difficult problem in JEE Advanced 2024. As such, the paper was on the easier side comparatively. Okay, comparatively means with compared to physics and chemistry and compared to last year. Still, in the competitive environment, it's tough to deliver. So let's wait for the result. The first question is straightforward, thus I'll not do. Second question, we have देख सकते हो. This is a usual typical ideas in which many JEE mains has also asked similar problem. Third is again it's 1 to the power infinity concept, so it's fine. Fourth question is little bit. Usually we don't do these kind of problems, but it's still simple. Let's see how to do. So f of x is this if x is not equal to 0 and 0 if x is equals 0. And we have to find the root of this. Usually they'll ask about differentiability and continuity. This time डायरेक्ट रूट्स पूछ रहे हैं आपसे. चलो एक बार कर लेते हैं. तो एफ ऑफ एक्स जीरो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स जीरो होगा एट एफ जीरो इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. और व्हेन इनपुट इज नॉन जीरो, इफ इनपुट इज नॉन जीरो देन द फंक्शन विल बिकम एक्स स्क्वायर sin pi by x square. So if now function has to die when input is not zero, it means this equal to 0 for x non-zero. So if x is non-zero, the only possibility is sin of pi by x square should be 0. This gives pi by x square should be n pi. Pi cancel, तो यहाँ से x square is 1 by n. And now you know n should be positive integer because n cannot be negative. Okay, so with this information now I can go for option hunting. The first option is f of x equal to j infinitely many solution in this interval. So you see if x belongs to this interval, x square will belongs to 1 by 10 to the power 20 to infinity. So n equals 1 by x square, right? So 1 by x square will go from 0 to 10 to the power 20 included. Now since 1 by x square is n, so n belongs to this. If n belongs to this, now n can take possible values of 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And for every one, let's say n equals 1, then I'll get one solution as x equals 1. For n equals 2, I'll get another solution x equals 1 by root 2. Negative is not allowed. Okay. In fact, plus minus root 2 आपको पता चलेगा, ठीक है. For n equals 3, I'll get x equals plus minus 1 by root 3 and so on so forth. आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज रॉन्ग. तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स जीरो हैज नो सॉल्यूशन इन दैट 1 by pi. So again when x belongs to this, 1 by x square will belongs to 0 to pi and 1 by x square is n, so n belongs to 0 to pi. So we have finite values, right? जैसे 1 2 3 ऐसे ही आएगा. सच नो सॉल्यूशन, ये भी गलत बात है. थर्ड इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन in the interval 0 to 1 by 10 to the power 10 is finite. So again when x belongs to that interval, I know 1 by x square will belongs to 10 to the power 10 to infinity. Of this interval में we know n equals this, so n belongs to 10 to the power 10 to infinity. So integer now can be infinitely many, 10 का power 10 plus 1, 10 का power 10 plus 2 and so on so forth. So this is also wrong. So clearly option D correct हो जाएगा. If you want you can check option D separately also, not in the examination but here. So x belongs to 1 by pi square to 1, right? So x square belongs to 1 by pi 4 to 1 by pi square. Hence I can tell 1 by x square belongs to pi square to pi 4, right? And 1 by x square is n, so integer belonging to pi square and pi 4. Okay, now pi square roughly it is 3 point something to 9 point something पे ही जाएगा, 9 point something, and that is pi 4 directly don't tell 9 point something whole square, so it will be little less than 100 only. Okay, less than 100. तो ये तो पक्का है. तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगा मेरा इंटीजर का, दैट विल बी 10 11 12 13. दे हैव गिवन मच विंडो until 99 it will go. ठीक है. Even if you have not founded pi 4 accurately because they are on very conservative side, so they are telling on the conservative side they were there, so has more than 25 solutions. तो आपको तो पता है अगर आप इसको 81 पॉइंट समथिंग भी अगर अप्रॉक्सीमेट करते हो, विच इज रॉन्ग अप्रॉक्सीमेट, देन स्टिल यू देखो मोर देन 24 इज डेफिनेटली देयर. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज टिपिकल क्वेश्चन ऑफ लिमिट स्ट्रेट लाइन ऑन पैरेलल. ये 3D का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ये भी
coordinate geometry का this kind of problem is available in most of the standard textbook. This is also not very difficult क्योंकि यहाँ पे calculation is straightforward. You know directrix line is x equals -2 but the point was -4,0 and you can exploit the symmetricity of the problem. ठीक है ना, तो यहाँ से you can write equation of tangent is y equal to mx plus a by m and am is 2m and that make pass through -4,0. So from there you will get the slope value. ठीक है, you will get m1 and m2. अब जैसे ही स्लोप यू नो, सो फ्रॉम देयर यू नो द पॉइंट एम ए स्क्वायर कमा 2m. फिर जैसे ही पॉइंट निकल गया तो आप ऑर्थो सेंटर भी निकाल सकते हो और इवन फॉर ऑर्थो सेंटर कैलकुलेशन यू कैन सिंपली टेक स्लोप प्रोडक्ट इज माइनस. ओके, सो टेक अल्फा बीटा एंड स्लोप प्रोडक्ट. मोर एवर यू कुड सी फ्रॉम सिमेट्रिसिटी ऑर्थो सेंटर सिंस आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, सो ऑर्थो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा. ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को यू कैन एज्यूम अल्फा कमा 0 एंड डायरेक्टली मेक योर कैलकुलेशन फास्टर. Similarly, length of line segment is a standard question. Either you can find the length of tangent by simply finding distance formulas, right? क्योंकि this point is known, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो. This was also a standard question. Question 8 तो बहुत ही standard था. The only problem is you see they have not mentioned if a continuous functions. In fact, this statement if they would have asked in subjective question, it will be really tough because you have to show this holds for if this Cauchy's first relation or fundamental functional equation we call first functional equations of Cauchy's. So to prove like it will hold for f of x equal to kx only, that is the only class of function which will satisfy, not something very trivial. In fact, since this is objective examination, so that we can take advantage of that. Otherwise it will be very great question, right? Usually most of the JEE textbook misses it. क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आप ये तो प्रूव कर सकते हो फॉर नेचुरल नंबर, बिकॉज फॉर नेचुरल इफ विल पुट 1 in 1 you'll get f2 is 2f1, you'll get f3 is 3f1, right? Again you can fill the gap between for every rational number p by q. Now from rational you can go to negative integers, positive integers is already included there. Okay, and then with the infinite density of number line you can prove like this is also valid for any irrational number. Okay, and with this irrational number now I can prove like it's valid for all real numbers. In one of the video I'll tell that. That's interesting. Similarly second part can be converted into first part by Cauchy functional relation और वहाँ पे the functional that satisfy this is a to the power x, right? तो फिर वहाँ से तो ये क्वेश्चन ट्रिवियल हो गया because of objective pattern. Question 9 is fine, little bit case making is there but still it's not difficult to do. अब क्वेश्चन 10 तो काफ़ी ईजी है बिकॉज दिस टू पार्ट इज सेम एंड अगेन दे आस्क नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. यू सी दे हैव रिपीटेड द क्वेश्चन. सो sin x plus 2 by e का power pi x and then we have this stuff, right? Now there is no hope for any solutions from here. This is always non-zero because sin x plus 2 is always positive and e का power pi x. अब यहाँ से डिनोमिनेटर तो आप देख सकते हो ऑलवेज डी ग्रेटर देन 0 है, इसका लेस देन 0 है. ऑलवेज दिस इज अपवर्ड पैराबोला, नो होप. So the only hope is when this quantity is 0. Now if we'll differentiate this, we have 2023 x to the power 2022 plus 2024 which is strictly positive. तो ये वाला जो फंक्शन आ रहा है वो तो strictly increasing हो जाएगा बाबू. So it has got exactly one solution. They have asked just number of solutions, answer is 1. In fact solution is -1, आप चेक कर सकते हो. इस प्रॉब्लम में I don't know why they have asked p cross q, आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, p cross q you can calculate from here. p and q is given, just compare and you are done. But still it will take 3 to 4 minutes. One is I could have taken dot product with p. So p dot this will give only p dot q because p dot p will go. Similarly, you know, like p dot q is fine and p dot this part will be 0. So we'll get one relation in alpha beta. Similarly, if we'll take dot product with q, I'll get another relation between alpha and beta. So from there we can find alpha and beta. Now once you know alpha beta, यहाँ put करके gamma find कर सकते हो. ठीक है, तो there was another way of doing this. अब cross product will not work because if I'll take cross product with p, okay, so p cross p will die but p cross q and again p cross q or p cross q will come into picture. So this will become p dot q into p vector minus mod p a square into q vector. ये तो और डिफिकल्टी हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशन में. सो द पॉइंट वाज नॉट टू मेक इट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड. नॉर्मल का क्वेश्चन फिर स्टैंडर्ड है पैराबोला पे. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक नेवर डू एनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉब्लम विच इज इंक्लाइंड एक्सिस. देख रहे हो स्टैंडर्ड एक्सिस से क्वेश्चन पूछा गया. हाँ, दिस क्वेश्चन नंबर 13 वाज अ बिट टेक्निकल वन एंड आई थिंक it is worth solving it. So let's try this question. So we have a function f 1 to infinity in R.
Okay, now this question was again motivated by examination by TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. They conduct, like examinations, their internal examination paper for PhD also. So there similar kind of problem appears. It was also seen in NBHM examination, which is CISR net examination. ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में इवन CMI and ISI sometimes they have the glimpse of this problem. So again, this is not a newly invented problem, but still it's fine, because instead of giving t equals 3 4 5, they kept again t as a variable. This I guess J advanced has already done before also little. So anyway, if I'll keep n equals 1, तो आप देख सकते हो अगर n का value if I'll keep 1, so the function ft, best way was to feel is to put some value. Function ft will become what? N equals 1 will give 2 for t equal to 1, and n1 will give t less than 1 to 3. Okay, तो यहाँ से जो ये function बन जाएगा, that is n1 is giving me 3 minus t by 2 into f of 1 plus t minus 1 by 2 into f of 3. तो ये फंक्शन मेरे पास बन के आ गया है. ठीक है. Now how to get f of 3? So f of 3 is also not very difficult, because f of 3 and f of 1 we can find by this again, the relation, function relation. So if I'll give n equals 2, I'll get f of 3 equals 2, right? N equals 2 will give what? It is minus 2, because we'll get minus, and we'll have f of 1. So f of 1 we already know, it's 2. So plotting this values here, we get basically f of t as 2 for t equals 1, and f of 1 is 2. So we have 3 minus t over 2 times 2, right, plus t minus 1 by 2 times f3, which is minus 2. तो फंक्शन जो मेरा फाइनली बन के आ रहा है बाबू, वो t equals 2 at 1 we are getting 2, and it's 4 minus, ये देख रहे हो ये कैंसिल गया, this is minus 1 minus t finally. So we have 4 minus 2t when t belongs to 1 to 3, 1 to 3. So this is my function in this interval. Alright, so this quantity we can make fast. As such it will be difficult, so they must have given some window. Yeah, okay, so they have given some window, like for g of x they have given function from x is from 1 to infinity, so 1 to infinity. Alpha is the solution of g of x in interval 1 to 8. इसका मतलब x पे जो वैल्यू है gx12 में x is going from 1 to 8, तो आपको सिर्फ 1 to 8 के इंटरवल में ये फंक्शन फाइंड करना है. तो सिमिलरली we can find, like for x equals 3 and 3 to 5. So let me show you. If I'll keep again the value of n as 2, so if I'll keep value of n as 2, I'll get ft equals 2 पे ये 3 आ जाएगा. Okay, so it's minus 2 for t equals 2, and you keep t equals 2, so we'll get 3 to 5. So t is going from 3 to 5. T when it is dancing from 3 to 5, under this condition what is the function? Since I have kept n equals 2, so this is f of 4, और ये मेरा हो जाएगा f of 5. ठीक है. अब f of 4 and f of 5 का वैल्यू अगेन we can calculate, क्योंकि f of 4 के लिए what we have to do, t equals 2 will give f of 3, right, not f of 4. So f of 3 we already know, minus 2, and f of 5 you can calculate, that will be 2, because for f of 5 we need to put n equals 3. ठीक है. तो आप वो अगर करोगे तो फिर से जो फंक्शन मेरा आने वाला है, ठीक है, वो इक्वल्स माइनस क्या आ रहा है, minus 2 at x equals 3 means at t equals 3, and that is becoming 2t minus 8 at t belonging to 3 to 5. Let's repeat for again 5 to 7, because we have to go till 8, right? So again if we'll put 5 to 7, so ft 5 पे आ जाएगा 2, we have just calculated, and it will be 12 minus 2t when x belongs to 5 to 7. And lastly f of t when we have last interval 7 वाला, so minus 2 at t equals 7, and 2t minus 16 at t belonging to 7 to 9.
So it is fine, like though this idea was easy, but you have to recursively use this again and again. ठीक है. So in that sense मतलब ये जो question है वो एक अच्छा question था. So now we know f of x behavior in different interval. तो आप ग्राफ से भी इसको देख सकते हो. So if we'll graph this entire function, because all these are linear segments, so it's better to like put it on the graphical scale. तो ये 1 पे तो 2 आ रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है 3 तक. 3 से अगेन इट्स गोइंग टू 5 पे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, और फिर से इट्स गोइंग टू 7 डिफरेंस लो एंड देन 8, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली 7 to 9 इज गोइंग टू 3 - 16. ठीक है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन 7 to 9 वाला इंटरवल. तो आप क्लियरली देख सकते हो जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स है 1 to x ft dt, and we want again root of this equation. I think the question setter was obsessed with finding root. ठीक है. So denotes alpha denotes the number of solutions of the equation gx equals 0 in this interval. अब number of solution में 1 to x that should die. अब 1 to x it will die. अब यहाँ पे clearly देख सकते हो when area and positive area negative area will cancel, it will die. So one of the answer for this is x equals 3. फिर this area will cancel this area, so other answer is x equals 5. नेक्स्ट एरिया 7 पे भी आप देख सकते हो, लाइक दिस एरिया विल कैंसिल दिस. इट मीन्स फ्रॉम 1 to 7 वाट एवर पॉजिटिव एरिया वी आर हैविंग दैट इज ईटन अवे बाय नेगेटिव एरिया. सो नेक्स्ट आंसर इज एक्स इक्वल टू 7 ऑल्सो. ठीक है. अब 9 तक में और कुछ एरिया नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो तो 3 सॉल्यूशन आ गया 3, 5, 7, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड ओनली टिल 8. यू सी द डोमेन व्हाट दे आर आस्किंग इज इन 1 to 8 ओनली. सो जी ऑफ एक्स इज डाइंग एट 3 point. Next was limit x tends to 1 plus gx by x minus 1. तो आप देख सकते हो 1 प्लस पे क्या जा रहा है, 1 प्लस पे वी आर जस्ट आफ्टर 1 प्लस विल हैव दिस ब्रांच राइट. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. तो जी एक्स क्या कैसा बिहेव करने लगा, जी एक्स स्टार्टेड बिहेविंग लाइक 4 - 2x राइट. जी एक्स बिहेविंग लाइक 4 - 2x. So the question was gx by this. So gx is 1 to x and 4 - 2x dx divided by x minus 1, limit x tends to 1 plus. By Leibniz rule this is obvious, so it's 4 - 2x. So differentiate. Okay, put x here and differentiate under. So if I'll differentiate ऊपर वाला it's 1 divided by differentiation of x minus 1 is 1. So x tends to 1, so that will give you 4 - 2 is 2. So the answer for this problem is alpha is 3 and beta is 2, hence answer is 5. So this was supposedly a good problem among all the available problem here in this paper. अब ये set notation वाला भी आसानी है, and since it's already available on YouTube on many sources, I am not giving you this. तब ये अच्छा question है. Just you have to understand the set of all relation from S cross S. So S cross S will have what? Will have pair 1, 1, 1, 2 like this blah blah blah. Okay, so relation has 6 element and a minus b2. So here you have to do just case making, right? So the moment you will do case making, you'll get to know the difference has to be more than at least 2. So 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 6, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 2 and 5, 3, 6, 3, 6, 4. So we'll have 20 elements here. आप देख सकते हो ये रिलेशन. तो फर्स्ट का तो आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली 20 चूज 6. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो डिफाइन कर रहा है. सो एम का वैल्यू विल गेट 20. ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना. सेकेंड वाला सिमिलरली आप कर सकते हो. तो इसमें प्रॉब्लम वाज मोर और लेस इजी. दिस वाज आल्सो बीजियर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट it's King's rule. For example, this can be written, I can make 2 inside and then is 0 to pi by 2 2fg minus g dx, right? Of this we can write 0 to pi by 2 2f minus 1 g dx. So 2x is 2 sine square x minus 1, that is minus times 1 minus 2 sine square x, that is minus cos 2x. तो ये आ गया 0 to pi by 2 minus cos 2x and we have root over pi x by 2 minus x square. ठीक है. तो अब या तो आप किंग्स रूल लगा सकते हो या फिर यहाँ पे आप सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में लगा सकते हो. यू कैन टेक
ओके एक्स कॉमन पाई बाई टू माइनस एक्स एंड देन यूज किंग्स रूल. जैसे ही किंग्स रूल आप ऐड करोगे तो थिंग्स विल वेरी सिंपल. एंड आई थिंक इसको कैलकुलेट करोगे तो जीरो आ जाएगा. ठीक है. Similarly, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. So that was the end of question paper. So as you can see, the overall paper was fine. I'll not tell. As you can see, the overall paper was fine. I'll not tell like it will be extremely in the examination hall because even calculation was there a little bit. लेकिन फिर भी overall you could have done good in this paper. और देखो जैसे first paper, let's now discuss paper one. First question itself is motivated by JEE Mains. In fact, this similar problem appeared in the mock IIT Kanpur mock test which I have given. Similar problem where differential equation was created. Okay, the second problem was also fine. It's quiz question. Third is straightforward questions from trigonometry because sin theta plus cos theta you can combine the transformation formula to. Okay, so this was also a basic one only where डायरेक्ट प्रॉब्लम कैन हैव बीन डन. राइट. इलिप्स वाला भी सही था क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम पूछ लिया. एस पी जब पॉइंट फर्स्ट कॉर्नर से दिस इज गेटिंग जीरो मींस द पॉइंट इज आउटसाइड इलिप्स एंड देयर वाज नो ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन फिफ्थ is directly from binomial and moreover you don't need to put binomial. You can put n equals 1 2 3 4 and like -1 -2 0 and try to feel what they are asking. With that only you could हैव किल्ड द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके क्वाड्रेटिक से ही था जो मैं मेमोरी बेस्ड में भी मैं बनाया हुआ था. हियर यू कैन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड यू गेट 2b t plus c t square where t is y by x. If this quadratic is always greater than 0 it must be always apart parabola. It means c is positive and d less than 0. बस ये करोगे ये पूरा क्वेश्चन ही किल्ड हो जाएगा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड बिकॉज जस्ट इट लुक्स थोड़ा स्केरी बट you can take a point x y z and the moment you will do just the distance formula. Okay, you put here and you can draw law options present. This is basic question from logarithm. ये भी ninth one भी fine. This type of question I have already done in one of my video lectures. In fact, if you'll see matrix and permutation, like counting number of matrices, I have given much harder level problem where I have told you like definitely they'll ask this year मैट्रिक्स विज कॉम्बिनेटोरिक्स. वो पूछ ही दिया. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ISI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न का. वो आप देख सकते हो. टीम डिवीजन इनफैक्ट सिमिलर टूर्नामेंट टाइप ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड बिफोर. क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर लिटिल बिट ट्राई टू प्ले विथ लोकस बट मोर और लेस इट्स फाइन. 13 क्वेश्चन ये थोड़ा टेक्निकल है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन हियर. ठीक है. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन go about it. So understanding the meaning of the question was more important than actually solving क्योंकि once you understand the meaning उसके बाद आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. पॉसिबली थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लेकिन स्टिल इट्स डूएबल. तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं. एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल. सो रैंडम वेरिएबल इट्स अ फंक्शन विच डिफाइंड फ्रॉम सैम्पल स्पेस. सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच टेक्स सैम्पल स्पेस एंड गिव्स सम रियल आउटपुट. ओके. In that sense x is a function actually. Anyway, let p x by x equals x denotes probability that x takes value x. Suppose that the point x comma p of x equal to 0 0 lie on a fixed straight line on xy plane. Okay, so we have this point, let's say 0 comma p of 0, 1 comma p of 1. So like this they have mentioned. See, decoding problem is important. So 2 3 4 comma p of 4. So they lie on fixed straight line in xy plane. And p of x equal to x equals 0 for all x belonging to R except 0 1 2 3 4. इसका मतलब इसके बाद the probability distribution is such that probability of x equal to x is is 0 for all x except all real except 0 1 2 3 4. If the mean of x is 5 by 2 and variance of x is alpha, then you have to find 25 alpha. It means with the mean information I should be able to get alpha. तो क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गया. ठीक है. तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स स्ट्रेट लाइन ऑन विद दिस लाइज इज वाई इक्वल टू मान लो सपोज हम एक्स प्लस लेमडा ले लेते हैं. राइट.
And now we can take the values of maybe p of 0 you don't know, so let's say a b c d e, कुछ ये वैल्यू ले लो और अल्फा बीटा गामा whatever. तो यहाँ से now since they lie on a straight line, so their slope will be equal, okay, between 2 points. यहाँ से we'll get a relation b minus a by 1 is c minus b by 1 is d minus c by 1 equals e minus d by 1 equals some slope m. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वांटिटी कैन यू सी दे आर सेम, सो इट मीन्स ए बी सी डी आर इन ए पी. ये हो गया ए बी सी डी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यू नो सिग्मा पी एक्स मस्ट बी 1 बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रैंडम वेरिएबल. ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू लेट्स से 1 इज ए एट एक्स इक्वल्स बी इज बी सी डी, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी बिकॉज इवेंट समथिंग मस्ट हैपन. तो यहाँ से विल गेट ओके द वैल्यू ऑफ सी जो आएगा आपका हाफ 1/5 आ जाएगा 1/5. तो फिर यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ऑल ए बी सी डी बिकॉज सिंस दे आर इन ए पी, सो यू कैन फाइंड 1/5 माइनस समथिंग. ओके 2k 1/5 minus k, we have next 1/5 plus k, where k is common difference, 1/5 plus 2k. So once you know these are the values of the entries, then mean is already given, mu is 5/2. ठीक है, तो आप मीन का वैल्यू आप निकाल सकते हो 5/2, क्योंकि मीन क्या होगा, मीन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी नंबर ऑफ टाइम्स दे अपीयर. सो 0 appears, a appears 0 times, so okay 0 times 1 plus 2 appears like b appears 1 times. तो हम ऐसे कर सकते हैं a appears 0 times, b appears 1 times, c appears 2 times, d appears 3 times और e जो है वो 4 times. दैट्स इक्वल्स 5/2. यहाँ से आपको डायरेक्टली k का वैल्यू जो आ रहा है वो 1/20. अभी दिस कैलकुलेशन में स्टिल इट विल टेक 2 minutes टाइम. तो ये तो है, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन था लास्ट में फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इट इज़, बट बेसिकली इट कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी थ्योरी ओनली. तो यहाँ से वेरिएंस यू नो इट्स सिग्मा एक्स स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स होल स्क्वायर विच इज बेसिकली मीन स्क्वायर. सो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन. अब एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स फिर आपको कैलकुलेट कीजिए. तो यहाँ से जो आपको 24 अल्फा का वैल्यू आने वाला है, अल्फा विल बी 7/4. ओके, सो दैट यू विल गेट एज 42. अब इसको सही से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन द पॉइंट वाज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. और फिर अब दिस कैन ऑल्सो बी मेड शॉर्टर लाइक विदाउट एज्यूमिंग y इक्वल टू mx प्लस लैम्डा, स्टिल यू कैन डू फास्ट. ठीक है, सो दैट यू थिंक कैसे करेंगे, ये रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन है. ठीक है, लाइक बेस्ट फिट मेथड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को थोड़ा आइडिया हिट करके कर सकते थे. इन वन ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू ऑल्सो हाउ टू स्कैन दिस पेपर. ठीक है, क्योंकि अब इस पेपर में ऑलमोस्ट 25% प्रॉब्लम से स्कैम भी किया जा सकता था विदाउट logical scam, like it's not like unlogically you are illogically you are trying to murder it. Okay, one announcement I want to make, like since I strongly believe like if a good problem collections if you are having of relevant problems, like because in market on YouTube there are so many problems which is good to gain knowledge, but you know it's not relevant for J advanced examination. For example अभी देखो आप J advanced का पेपर देख रहे हो और तुम मेरा वीडियो उठा के देखो हम किस टाइप का रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हम किए थे. तो अपार्ट फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स आई डू बिलीव लाइक 1% प्रॉब्लम्स में माइट हैव बीन ऑफ ट्रैक, लेकिन मोस्टली ऑल द प्रॉब्लम्स वाज अराउंड दीज आइडियाज ऑनली. ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और दोज काइंड ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट्स इफेक्टिव एज वेल एज इफिशिएंट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे दोज हु आर 2025 और 2026 एस्पिरेंट, उनके लिए हम एक स्पेशल कोर्स आई विल स्टार्ट. ठीक है, वेयर आई विल ज्वाइन मे बी अराउंड 50 स्टूडेंट, एक बैच में 50 स्टूडेंट रखेंगे और उनके लिए एक कोर्स करेंगे जहाँ पे ऑल गुड क्वालिटी कंटेंट आई विल गिव यू, लाइक थियोरी कंटेंट विल सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम सम ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट मटेरियल एज वेल एज फ्रॉम ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में भी कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, और उसके बाद दैट विल बी आवर फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अलॉन्ग विद यू नो लास्ट 5 years प्रॉब्लम्स और लास्ट 10 years प्रॉब्लम ऑफ जे एडवांस. अब वो पूरे करने के बाद यू विल गेट अल्टीमेट कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स जब आप पूरा फील्ड से पढ़ रहे हो. और लास्ट में आई विल सॉल्व माई ओन बुक, क्योंकि आई हैव माई ओन बुक अपकमिंग इन 2 months. सो देयर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी ऑफ अराउंड टॉप 100 रैंक वाला प्रॉब्लम्स होंगे. अब जिसको करके आप 1000 के अंदर आराम से आ सकते हैं मैथमेटिक्स में. ठीक है, तो फॉर नाउ अभी सिर्फ मैथमेटिक्स का हम कोर्स तैयार करेंगे एंड विल अनाउंस इट सून बाय दिस वीक. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन comment in the comment section
इन नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट अ व्हाट्सएप लिंक वेयर विल क्रिएट द ग्रुप और फिर वहाँ हम लोग बेहतरीन एक कोर्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है. So I hope you are enjoying the lectures. Stay tuned for more lectures and quality content.